हेलो एवरीवन मु रंजीत ओपीएससी ओसीएस प्रीलिम सिलेबस अनुसार करंट अफेयर रो किछि क्वेश्चंस नै कि आसी मॉक नंबर 1 रे वीडियो कंप्लीट देखंतु जदि क्वेश्चंस गुडी आपनको ठीक लागे देन कमेंट निश्चित करिवे मु आउ गुडी क्वेश्चंस नै कि मध्य आसीबी प्रैक्टिस पर्पस रे। तो चलंतु डेट न करी स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन करंट सिनेरियो रे जेमति क्वेश्चंस आपनको पचारछि से टाइप रो ही क्वेश्चंस नै कि आसीछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन हैला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023। How many of the above statements are correct? वीडियो को पॉज करंतु आंसर कोन होबो निजे एनालिसिस करंतु देन प्ले करिवे। The primary objective is to encourage people's participation at local level government. Out of box अछि। The bill seeks to decriminalize provisions. एटा ठीक अछि। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होछि एनहांस करिवो ease of living and ease of doing business को केमिति decriminalizing 183 provisions. By amending these provisions, the bill aims to reduce the burden of legal complexities. ये मध्य ठीक अछि। Promote more business friendly and citizen friendly environment. The bill proposes the introduction of compounding of offences. Fines, penalties को revise करा जिवो ये मध्य ठीक अछि। तो तीनटा स्टेटमेंट ठीक अछि। तो ऑप्शन सी हेजो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये हला गोटे पर्टिकुलर मंथ रो किछि क्वेश्चंस नै कि आसीछि। Which of the following options correctly describe the T+1 settlement system recently seen in the news? T+1 settlement system. Option A दैछि it refers to the transaction that is initiated through a bank and allows for the movement of funds from one account to another. It refers to reporting and recovery of NPA within 1 year from the day it is listed as NPA. It refers to the settlement dates of security transactions that occur on a transaction date plus 1 day. It refers to recovery phase of business cycle after recession. The correct answer is here option C. It refers to the settlement dates of security transactions that occur on a transaction date plus 1 day. Settlement first हेले market रे liquidity increase हेबो। Example जदि फ्राइडे रे गोटे शेयर नेले अकाउंट को क्रेडिट हेबा पई 1 डे केवल 1 डे माने सैटरडे सुधा आपनको अकाउंट रे क्रेडिट कर दिया जीवो। तो एथरे फर्स्ट हैला तो सेटा ही जगह रे सेटलमेंट रे बुझा जाइछि जे इट रेफर्स टू द सेटलमेंट्स डेट्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन दैट ऑकर ऑन ए ट्रांजैक्शन डेट प्लस 1 डे। क्लियर। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 देला इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड ICED 3.0 will facilitate insights and enhance understanding of the energy and climate sector. Statement 2 Ministry of Environment, Forest and Climate Change develops it in collaboration with Vasudha Foundation. Which one of the following is correct in respect of the above statements? अच्छा करंट अफेयर जो माने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करछंती करंट अफेयर ओडिशा करंट अफेयर वीडियो जो मु करे जो माने देखि नांती देखि नेबे 2023 करंट अफेयर प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अछि सीक्वेंस रे सब करंट अफेयर एवं ओडिशा जीके रिलेटेड मध्य किछि वीडियोज अवेलेबल अछि। The statement 1 देछि India Climate Energy Dashboard ICED 3.0 will facilitate insight and enhance understanding of the energy and climate sector. एटा completely ठीक अछि। Statement 2 देछि Ministry of Environment, Forest and Climate Change develops it in collaboration with Vasudha Foundation. ए जगह रे Vasudha Foundation ठीक अछि। Vasudha Foundation ठीक अछि कोलैबोरेशन हेछि बट या सहित किए ना नीति आयोग प्लस एनर्जी सेक्टर ए जगह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नाही। तो स्टेटमेंट 2 कंप्लीटली रॉन्ग अछि। तो सही हिसाब रे एटा तो हबनी तो एटा ऑप्शन सी हे जो करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर। आगु रिलीज किए करिछि नीति आयोग।
Next, with reference to Prime Minister's Development Initiative for Northeast Region, PM Divine, Kim consider the following statement. It will aim at providing livelihood opportunities to the youth and women of Northeastern region. The central government is bearing the entire fund of the scheme. Which of the above statements is or are correct? PM Divine. Full form hochi Prime Minister's Development Initiative for Northeast Region. So it will aim at providing livelihood opportunity to the youth and women of Northeastern region. ठीक अच्छी the central government is bearing the entire fund of the scheme. एटा भी ठीक अच्छी. The both are correct. Both 1 and 2 are correct. Next, consider the following statements with reference to the Prohibition of Electronic Cigarettes Act (PECA). Prohibition of Electronic Cigarettes Act. E-cigarettes are battery-operated systems that heat a substance, liquid or solid, which contains nicotine and often flavors to create an aerosol for inhalation. PECA prohibits the production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution and advertisement of e-cigarettes in India. Which of the above statements is or are correct? दीटा जाक ठीक अच्छे. देखो मुझे आउथर कहना चाहूँगी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन निजे पढ़ी कि जदि आंसर कही सारा पर प्ले करुँच देन वीडियो आपन बहुत फ्रुटफुल रहिबो. तो ये जगह ऑलरेडी स्टेटमेंट रे ही मेंशन कर दिया जाइछि ई सिगारेट रो एरोजोल्स रे निकोटिन रहउछि कैंसर कॉज केमिकल्स मध्य थाए ता सहित से सब्सटेंसेस रे निकेल मध्य थाए टीन मध्य थाए लेड मध्य थाए व्हिच इज हार्मफुल टू हेल्थ. क्लियर. तो दीटा जाक स्टेटमेंट ठीक अच्छे. PECA prohibits मध्य करूछि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ई-cigarettes in India. Both are correct. Next, what is the purpose of IMDS experimental heat index launched on an experimental basis in India? Heat index, IMDS experimental heat index. What is the purpose? The option A requires to measure the impact of humidity on high temperature in Antarctica, to offer guidance on precautions to alleviate discomfort caused by high temperatures and humidity, to implement color-coded weather alerts for cyclones in the northern Indian Ocean region, to forecast weather conditions for different cities in India. अच्छा आउ गोटे कथा कहवा भूली गली को जगह जदि किसी भूल पाइबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणाइबे. हीट इंडेक्स तार करेक्ट आंसर हबो बी, टू ऑफर गाइडेंस ऑन प्रिकॉशंस टू एलिविएट डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. क्लियर. नेक्स्ट, with reference to sovereign green bond SGB, consider the following statements. So statement 1 कहला green bonds are bonds issued by any sovereign entity, intergovernmental groups or alliances and corporates with the aim that the proceeds of the bonds are utilized for projects classified as environmentally sustainable. Investors in these bonds do not bear project related risk. USA was the first country to issue green bond in 2016. How many of the above statements is or are correct? The first statement देइछि green bonds are bonds issued by any sovereign entity, intergovernmental groups or alliances and corporates with the aim that the proceeds of the bonds are utilized for projects classified as environmentally sustainable. ठीक अच्छे. एटा रिसेंटली माने लास्ट ईयर कथा कहूँ PFRDA मध्य अलाउ करुच्ची पेंशन फंड को इन्वेस्ट करने.
गोटे बहुत बड़ माने एग्जांपल कहि परिबा सेकंड कहला इन्वेस्टर्स इन दिस बॉन्ड्स डू नॉट बियर प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क एटा मध्ये ठीक अछि USA was the first country to issue green bonds in 2016 completely wrong first country होची पोलैंड फर्स्ट कंट्री होची पोलैंड जदि फर्स्ट टेक कंपनी आमे कहबा ताले एप्पल सबुठू अधिक ग्रीन बॉन्ड्स केउ कॉन्टिनेंट रे यूज करा जे कहया गले यूरोपियन कॉन्टिनेंट रे मोस्टली यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स माने अधिक इशू करंती क्लियर तो ए जगह रे केवल 1 एंड 2 ठीक अछि तो ओनली 2 क्लियर नेक्स्ट Consider the following statements with reference to external commercial borrowing. ECBS, external commercial borrowing. How many of the above statements either are correct? First statement कहला it is an instrument used in India to facilitate Indian companies to raise money outside the country in foreign currencies for the expansion of existing capacity as well as for fresh investments. The funds are available for a relatively short term. ए जगह भूल एटा भूल अछि शॉर्ट टर्म नो लॉन्ग टर्म पई मध्य अवेलेबल हुए तो एटा भूल अछि The cost of funds is usually cheaper from external sources if borrowed from economies with a lower interest rate. मिले lower interest rate रे मध्य मिले तो ये कहबा फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अछि थर्ड मध्य ठीक अछि सेकंड बोल अछि तो केतेटा स्टेटमेंट ठीक अछि दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि ठीक अछि तो ये जगह जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ईसीबी या अर्थ होछि हमें जदि सिंपल जनरल वर्ड रे बुझिबा बोरोइंग मेड इन फॉरेन करेंसी बाय नॉन रेसिडेंट लेंडर्स टू इंडियन बोरोअर्स ठीक अछि नेक्स्ट consider the following statements with reference to Crimean Congo hemorrhagic fever CCHF Crimean Congo hemorrhagic fever recently news रे थिला तो तार रिलेटेड तीनटा स्टेटमेंट दिया जाइछि इट इज ए वायरल hemorrhagic fever usually transmitted by ticks there is no vaccine available for either people or animals it is endemic to Africa the Balkan countries the Middle East and parts of Asia how many of the above statements either are correct तो कहिछि it is viral once again it is viral fever usually transmitted by ticks केवल एटा ठीक अछि बढ़िया सहित से ब्लड रू मध्य ट्रांसमिट हेई परिबो बॉडी रो फ्लूइड्स रू मध्य ट्रांसमिट हेई परिबो स्वेट रू मध्य हेई परिबो आ मोस्ट इंपोर्टेंट सालाइवा रू मध्य हेई परिबो एथिरे एनिमल माने मध्य अफेक्ट हुअंती there is no vaccine available for either people of animals या पे वैक्सीन बाहरी नहीं एवं मोस्ट इंपोर्टेंट कथा होची आकु कंट्रोल केमती करा जाउची सिम्पटम्स को कंट्रोल करा जाउची यार जहा जहा भी सिम्पटम्स अछि से सिम्पटम्स को कंट्रोल करिया पे मेडिसिन जहा भी अछि ताको यूज करा जाय कि ताको कंट्रोल करा जाउची क्लियर इट इज एंडेमिक टू अफ्रीका बल्कन कंट्रीज मिडिल ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ एशिया सब ठीक अछि आउ यार इनिशिएशन कोठु केमती कहितला कहि परिबा यूरोप रो ही स्टार्ट हेछि यूरोप तो मोस्टली आमे कहबा माने ठंडा कोल्ड एरिया एनवायरनमेंट ठंडा ही थाए तो वाइल्ड फायर रो हीट वेव यार होछि रीजन हीट वेव रो ये केमती कोन स्टार्ट हेछि ठीक अछि तो यार करेक्ट आंसर हो तीनटा जगह ठीक ऑल थ्री आर करेक्ट क्लियर नेक्स्ट
जो मान को वीडियो स्लो लगुच वीडियो को 1.25 कि 1.5 स्पीड रे देखिकी शेष करें। बहुत कम क्वेश्चन अच्छी विथ जेहेतु गोटे पर्टिकुलर मंथ रो with reference to local currency settlement LCS system consider the following statement. Which of the above statement is or are correct? First statement dela the local currency settlement system enables exporters and importers to invoice and pay in their respective domestic currencies. Second statement, the LCS system between India and Bangladesh allows for the use of the Indian rupee and Bangladesh taka in bilateral trade. प्रथमटा ठीक अच्छी लोकल करेन्सी सेटलमेंट सिस्टम एनाबल्स एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स टू इनवॉइस एंड पे इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेस्टिक करेन्सी परफेक्ट अच्छी सेकेंडटा भूल अच्छी ए जगह जो बायलेटराल ट्रेड कथा पड़ी यूएई सहित नॉट बांग्लादेश यूएई सहित इंडिया रुपी जो इंडियन रुपी यूएई रो दिराम एमान को मध्य बायलेटराल ट्रेड चली ठीक अच्छे तो केवल 1 हम यार करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट consider the following statement with reference to Hullock Gibbons the first statement dela Hullock Gibbons are found in India, Myanmar and Bangladesh ठीक अच्छे These animals are known to live in tropical evergreen forest and are commonly found near rivers. ये मध्य ठीक अच्छी Gibbons is the smallest and the fastest of all apes. ये मध्य ठीक अच्छी GGN कौन Global Gibbon Network गोटे इवेंट रे स्टेटमेंट देइथिला जे डिफॉरेस्टेशन होची सबुठु मुख्य रीजन एमानंकर संख्या ह्रास पाइबार इंडिया रो नॉर्थ ईस्ट रीजन रे एमाने देखिया को मिलंती एवं एमानंकु IUCN डिक्लेयर करि सरची एंडेंजर तो तीनटा जगह स्टेटमेंट ठीक अछि तो यार आंसर हबो ऑल 3 clear next consider the following statement about Amrit Bharat station scheme बहुत इजी क्वेश्चन एटा हैगला स्टेटमेंट 1 देजी the scheme envisages development of stations on a continuous basis with a long term vision statement 2 देजी the scheme shall cater for introduction of new amenities as well as upgradation and replacement of existing amenities तो कोटा करेक्ट अच्छी इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स स्कीम एनविजेस डेवलपमेंट ऑफ स्टेशंस ऑन ए कंटीन्यूअस बेसिस विथ ए लॉन्ग टर्म विजन एटा ठीक अच्छी स्कीम शॉल कैटर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एमिनिटीज एज वेल एज अपग्रेडेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग एमिनिटीज एटा मध्य ठीक अच्छी बट दी जन को भितर किसी लिंक नहीं दीटा जाक तांको तांको जगह ठीक अच्छी तो ये टाइप रो क्वेश्चन रो यार आंसर हबो both are correct statement 2 is not correct explanation of statement 1 option B होगा यार correct answer ठीक अच्छी next thermal infrared imaging satellite for high resolution natural resource assessment TRISHNA TRISHNA यार फुल फॉर्म होची thermal infrared imaging satellite for high resolution natural resource assessment the mission is a joint initiative of क्यों दीटा देशर इंडिया फ्रांस इंडिया जापान इंडिया कनाडा इंडिया यूरोपियन यूनियन तो करेक्ट आंसर हम यार इंडिया एंड फ्रांस यार एम कौन रीजन होची मोस्टली कहि परिबा मुख्य एम होची क्लाइमेट मॉनिटर करिवो या द्वारा क्लाइमेट मॉनिटरिंग करा जीवो क्लियर नेक्स्ट consider the following statements all Scandinavian countries are member of NATO Sweden is located in northern Europe and is bordered by the Norwegian Sea to the east
The official currency of Sweden is the euro. How many of the above statement are correct? ये मध्य इजी क्वेश्चन है गला. तेरे रिसेंटली आमे माने सुनिचे कोन फिनलैंड जे कि 31st नाटो रो मेंबर हला. बड़े जगह रे स्वीडन हेनी. So all Scandinavian countries are member of NATO. Wrong. Sweden is located in northern Europe. Northern Europe ठीक अछि. Is border by Norwegian Sea लेखि देछि जगह रे. जोटा कि ईस्ट रे नॉर्वेन सी लिखि देछि. तो यार ईस्ट को अछि फिनलैंड, वेस्ट को अछि नॉर्वे. ए जगह रे मु टिके मोर ठीक रे मने नाही, माने टिके प्रॉपर मने पड़नी. ईस्ट रे फिनलैंड अछि, वेस्ट रे नॉर्वे अछि. नॉर्वेन सी टू द ईस्ट, ईस्ट को नाही एटा हबनी, फिनलैंड हबो. तो स्टेटमेंट 2 भूल अछि. The official currency of Sweden is the euro. ना यार euro नो यार कौन SEK, SEK कौन Swedish krona, Swedish krona SEK SEK. तो तीनटा जाको भूल होची. मोर 2 टा टिके डाउट अछि बट तीनटा जाको मो हिसाब रे भूल होची. तो ऑप्शन अरे सॉरी हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. तीनटा जाको भूल माने नॉन. ऑप्शन डी क्लियर. जदि दुईटा मुझे भूल कहते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जनइबे. नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS उत्कर्ष that was seen in the news recently? उत्कर्ष, INS उत्कर्ष. Torpedo launch and recovery vessel, amphibious warfare ship, nuclear powered aircraft carrier, Indian Naval Air Station. Andaman and Nicobar Command plus Indian Armed Forces jointly establish करिसंते. जॉइंट वार कहि परिबा कोन एटा? इंडियन नावल एयर स्टेशन, इंडियन नावल एयर स्टेशन. क्लियर. नेक्स्ट, the Institute of Economics and Peace has recently released the 2023 Global Peace Index GPI. The index measures peace across domains. कौन कौन सब तार डोमेन? Societal safety and security, ongoing domestic and international conflict, militarization. How many of the above mentioned domains are correct? Societal safety and security ठीक अच्छी, ongoing domestic and international conflict मध्य ठीक अच्छी, militarization मध्य ठीक अच्छी. तीनटा जगह ठीक अच्छी. All of the above, all three. Clear. Global Peace Index GPI 2023. Next, in the context of Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty, BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty, consider the following statements. It aims to regulate fishing, mining, and oil extraction in international waters. It covers the high seas, which constitute nearly half of the Earth's surface. It establishes marine protected areas and provides increased funding for marine conservation. How many of the statements given above are correct? Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty. It aims to regulate fishing, mining, and oil extraction in international water. ठीक अच्छी. It covers the high seas, which constitute nearly half of the Earth's surface. ये मध्य ठीक अच्छी. Establish marine protected areas and provides increased funding for marine conservation. ये भी ठीक अच्छी. तीनटा जगह ठीक अच्छी. Option 3 है जो यारा correct answer. All three are correct. Next, consider
consider the following statements regarding industrial park rating system IPRS industrial park rating system co statement correct अछि it rates the country's industrial parks and special economic zones it is an extension of the Indian Industrial Land Bank IILB platform it rates industrial parks across 4 pillars ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स अछि ठीक अछि सब जाको तीनटा जाको ठीक अछि all 3 are correct next with reference to places of OCP Act 1991 which of the statement is incorrect कहिछि कोटा incorrect OCP Act 1991 बहुत पॉपुलर आवाको बहुत पुराना मध्य the act exempts its own applicability to the Ayodhya dispute involving Ram Janmabhoomi movement ठीक की भूल एटा ठीक अछि the act the act provides for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the day of commencement of this act the act provides for the maintenance of the religious character of any place of war as it existed on the day of commencement of this act. The act also exempted any place of worship that is covered by ancient monument and archaeological sites and remains act eta thik achi 1958 it prohibits conversion of any place of worship it prohibits conversion of any place of worship it prohibits conversion of any place of worship अच्छा ये भी ठीक अच्छी बीटा डाउट अच्छी बीटा ही इनकरेक्ट हबो ए तीनटा को ठीक अच्छी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ क्लियर नेक्स्ट with reference to just energy transition partnership JETP consider the following statement it aims to reduce emissions in the energy sector and accelerate the coal phase out process reduce emissions in the energy sector and accelerate the coal phase out process ठीक अछि Singapore has become the fourth country to sign the JETP deal after South Africa, Indonesia and India. Eta jana nai. JETP was launched at COP26 with support from the UK, US, France, Germany and EU. ये भी ठीक अछि. It aims to reduce emission in the energy sector and accelerate the coal phase out. यार actually aim कोन यार एम होची जोड़ा कि फ्यूल बेस्ड एनर्जी रही नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रही से सब को बंद करके रिन्यूएबल एनर्जी ऊपर शिफ्ट हवा यार होची मेन एम तो रिड्यूस एमिशन इन द एनर्जी सेक्टर एंड एक्सीलरेट द कोल फेज आउट प्रोसेस ठीक अछि ताले ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट एटा ठीक अछि Singapore has become the fourth country to sign the JETP deal एटा टिके आउट ऑफ नॉलेज अछि Only two statements are correct. Only two statements are correct. 1 and 3. Clear? तो ये 20 क्वेश्चन थिला केउ मंथ रो ये थिला सबु मैक्सिमम क्वेश्चन थिला जुलाई मंथ रो तो क्वेश्चन गुडी को केमति लाउची कोन लाउची कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणेबे आ आपण माने जानि छंती वर्तमान सिनेरियो हिसाब रे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन लेवल कोन थिला आ ता पूर्व वर्ष क्वेश्चन लेवल कोन थिला ठीक है अपग्रेड आपण माने देखिया को पाई छंती निश्चित आपण माने भी जानि थिबे तो सही हिसाब रे क्वेश्चन गुडी को मो डिफरेंट सोर्सेस रो कलेक्ट करिछि फ्रेम करिछि ठीक अछि तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल